अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया है कि डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशन ऑफ फार्मूला क्या है, डायमेंशन ऑफ इक्वेशन क्या है। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पहले एप्लीकेशन जो डायमेंशंस एनालिसिस की है वो डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज डायमेंशन एनालिसिस है क्या? It is the analysis of the relationship between different physical quantities by identifying their base quantities। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना उसकी जो इन टर्म्स ऑफ इट इज बेस क्वांटिटीज और फिर इसके रिलेशनशिप डेवलप करना विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या है? सो इट इज अ टूल, इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? The first thing is it is used to check the dimensional consistency of equations which is on the basis of principle of homogeneity। यानी क्या एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। Now the second application is convert units from one system to another। Now the third application is derive the relation between physical quantities based on certain reasonable assumptions। यानी आपके पास कुछ reasonable assumptions है, उनके बेस पर आपने assumptions लिया है कि कोई physical quantity किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। जब आपको वो चीज़ें पता तो उसके बेस पे आप एक फिजिकल रिलेशन डेवलप कर सकते हो क्वांटिटीज के दरमियान। इस वीडियो में हम पहली एप्लीकेशन देखेंगे। तो मैं स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है या जो बेसिस है, जिसकी बेस है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के यहाँ दो रूल्स मैंने पहले लिखे हैं। जो रूल फर्स्ट है वो क्या है? दैट इज only commensurable quantities। Commensurable quantities means quantities having the same dimensions may be compared, equated, added or subtracted। Second rule is that one may take the ratio of incommensurable quantities। Incommensurable quantities means quantities with different dimensions and multiply or divide them। कहने का मतलब क्या है? अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हैं तो आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो या सबट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उनके डायमेंशन सेम नहीं है तब आप ये चीज़ें इन्हें कंपेयर, इक्वेट, ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, मगर उनका रेशियो ले सकते हो, इन्हें डिवाइड कर सकते हो, आप उनको मल्टीपल कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इट कैन बी यूज्ड एज ए सैनिटी चेक ऑफ फिजिकल इक्वेशन। यानी जो फिजिकल इक्वेशन आपके पास है, कोई भी रिलेशन जो आपके पास है, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि ये ठीक है या नहीं है। कैसे? क्योंकि जो भी उसमें टर्म्स होंगे उन सब टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तब जाके आप उनको आपस में इक्वेट, ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो। अगर वो सेम नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप ये नहीं कर सकते। दैट मीन जो ये रिलेशन है ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों को हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो एक क्वेश्चन के तौर पर है। इसमें क्या है? विच वन इज लार्जर, मास ऑफ हॉर्स और लेंथ ऑफ डंकी? इफ यू यूज द कॉमन सेंस वी कैन डू इट। व्हाई? वी आर कंपेयरिंग मास विद लेंथ। मास डायमेंशन m, लेंथ डायमेंशन l। यू आर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज व्हिच हैव डिफरेंट डायमेंशंस। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज you cannot do it, it's wrong। Now the second question is which one is larger, mass of horse or mass of donkey? Can you do it? Yes, we can do it because both are masses, both have the same dimensions, so we can compare them. Now let's come for addition purpose. Here we have to calculate mass of horse plus length of donkey. Can we do it? No, we cannot. We are adding two quantities which have different dimensions. We cannot add mass to length or length to mass. Now the question 4, calculate mass of horse plus mass of donkey. Can we do it? Yes, both have the same dimension of mass, so we can add them. Now question 5 is calculate mass of horse times length of donkey. Can we do it? Yes. Two quantities have different dimensions, but we are multiplying them. So for multiplication, for division purpose, it is allowed. If two quantities have different dimensions, we can multiply, we can divide them, but we cannot add them, subtract them, compare them, or equate them. So it is for the multiplication purpose, so we can do it, though they have the different dimensions. और एक क्वेश्चन है calculate mass of horse times mass of donkey. क्या हम कर सकते हैं? Yes, we can. तो दो मास है, चाहे सेम डायमेंशन हो या डिफरेंट डायमेंशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हम कर सकते हैं। इसी तरह है कैलकुलेट लेंथ ऑफ हॉर्स टाइम लेंथ ऑफ डंकी। यस, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट।
another thing here is mass of horse divided by length of donkey. Can you do it? Yes, in dating we don't have a problem. Whether the two concepts same dimension or different dimension, we can divide. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या है कैलकुलेट मास ऑफ हॉर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ डंकी. क्या है, हम कर सकते हैं? यस वी कैन, डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस तरह कैलकुलेट लेंथ ऑफ हॉर्स लेंथ ऑफ डंकी वी कैन. अलग एग्जाम्पल आपको क्या समझाने की कोशिश की है मैंने कि अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए, डिफरेंट डायमेंशन नहीं चलेंगी. अगर ऐड करना है डायमेंशन दोनों क्वांटिटी की सेम होनी चाहिए, डिफरेंट डायमेंशन क्वांटिटी से तो वो नहीं चलेगी. लेकिन मल्टीप्लिकेशन केस में या डिवीजन केस में हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है. आप चाहे उनके डायमेंशन सेम हो या अलग, आप उनको मल्टीपल डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन, व्हेदर दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. इसमें क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी जो है इसमें है ऐसे डिस्प्लेसमेंट, यूज इनिशियल वेलोसिटी, एंड टी इज टाइम, इज एक्सेलरेशन. तो इसका सोल्यूशन ऐसे है. तो जो ये क्वांटिटीज है इसमें इन्हें डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन, इनके लिए डायमेंशनल फार्मूला है जो m0l1 t0, वेलोसिटी जो है m0l1 t-1, टाइम इज m0l0 t1, एक्सेलरेशन m0l1 t-2. ये आपको पहले लेक्चर में पता चल गया कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते, कैसे निकालते. तो उस लेक्चर की लिंक, उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी. तो जब हम ये सारी डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रिलेशन में, तो पहले s की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ऐसे u, ठीक है, फिर टाइम t की है, एंड प्लस फिर यहाँ 1/2 फैक्टर है. एज इट इज अ कांस्टेंट, इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसके डायमेंशन नहीं है तो इसको छोड़ते हैं. तो इस बार एक्सेलरेशन, तो ये है एक्सेलरेशन की डायमेंशन. इसके बाद टाइम है लेकिन स्क्वायर में है, तो ये है टाइम की डायमेंशन, फिर इसके ऊपर स्क्वायर. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको ऐसे ही रखेंगे हम. तो यहाँ देखेंगे हम कि we are multiplying m0 with m0, so base or same powers can be added. So 0 plus 0, that's 0. Here it is l, 1 plus 0 is 1. So t minus 1, it is plus 1, so it will become 0, remain as they are. So m0, l1, l0, it will become 1 plus 0, that's 1. So t minus 2, and here it will become t square. So minus 2, here is plus 2, so it is going to be 0. Now you can see here, we have here 3 terms, 1 on the left hand side, 2 on the right hand side, but all the terms have the same dimensions. That means, as per the principle of homogeneity, this relation is dimensionally consistent, it is dimensionally correct. If अगर हमको यहाँ मिल जाए किसी जगह सपोज यहाँ जो dimension it will be different, something m1, that's not same as there, then this relation would have been wrong. But we have find that all the terms have the same dimension. That means this equation is dimensionally consistent, dimensionally correct. Hope you have liked the video. Please do subscribe my channel and don't forget to click the like button. Thank you very much.